कौन बोल रहे हैं? Yes, Kostubh is there. Not yet, sir. Hi, Charlie. Welcome. Krishna ji, welcome. Okay, Atul bhai, you can go ahead. રેવા લોજ વડોદરા, રોહિત લોજ અમદાવાદ અને જ્યોતિ લોજ મુંબઈના ઉપક્રમે આયોજિત દિલ્હી ફેડરેશન, ઉત્કલ ફેડરેશન, મરાઠી ફેડરેશન અને મુંબઈ ફેડરેશનના મંગળવાર મીટના આજના પ્રવચન આપણી ચેતનાનો વિસ્તારના વક્તા સર્વેલીનાજી, સ્મિતાજી અને કૌસ્તુભજી તેમજ આજની સભાના મોડરેટર શ્રી તરલભાઈ મુનશી તેમજ આજની સભામાં હાજર સર્વ સભ્યોનું સ્વાગત કરું છું. આજની સભાની શરૂઆત શ્રી હર્ષવર્ધનભાઈ શેઠ વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી કરાવશે. હર્ષવર્ધનભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. Thank you. O hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. Oh, hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. Oh, hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he is also one with every other. Shanti, Shanti, Shanti. Thank you. હર્ષવર્ધનભાઈ, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે હું શ્રી તરલભાઈ મુનશીને આજની સભાની આગળની કાર્ય માટે આમંત્રિત કરું છું. તરલભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी, और स्वागत है सुरीलना जी, स्मिता जी और कौस्तुभ जी, तीनों आज के वक्ता जो हैं. धन्यवाद हर्षवर्धन भाई, और सभी लोगों को धन्यवाद जो यहाँ पधारे हैं. सुरीलना जी का एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगा कि मैं लाइफ मेंबर तो है ही थियोसॉफी की, और 2003 से वे मेंबर हैं, लेकिन बहुत ही एक्टिव हैं, और उन्होंने यूथ कैंप्स तो काफ़ी अटेंड किए ही हैं, मोटिवेट किया हुआ है. लेकिन उसके साथ ही जो है वे बहुत सारे एनजीओज के साथ भी संलग्न हैं, और उसके साथ होलिस्टिक डेवलपमेंट जो बच्चों के लिए है उसके लिए भी उन्होंने बहुत कार्य किया हुआ है. और वे लगातार 2017 से प्रयास लॉज के साथ एक्टिव हैं. हाल ही में उन्होंने काफ़ी सारा काम ऑनलाइन भी किया हुआ है. एक ऑनलाइन पत्रिका हम तक पहुंचाती हैं वो, जो उनकी बिटिया बनाती है या उसको प्रोड्यूस करती है, और नेशनल लेवल पर भी उनके काफ़ी सारे लेक्चर्स अलग अलग रीजन से आते रहते हैं. दिल्ली रीजन से अभी हाल ही में उन्होंने उत्कल फेडरेशन से भी अपना व्यक्तित्व दिया. तो बहुत ही एक्टिव, नृत्य में प्रवीण है वे, और हमें कभी कभी सौभाग्य मिलता है उनका. आशा है कि शायद आगे भी कन्वेंशन में और इन सब जगहों पे मिलेगा. और वे भी आमंत्रित हैं, कनाडा आ रही हैं, और अभी कन्वेंशन में भी जो लोग आ रहे हैं उनसे मिलेंगी. बहुत ही अच्छी वक्ता है, जो भी सब्जेक्ट लेती है वो यकीनन हमारे जहन में प्रवेश कर जाए. सुलना जी, गो अहेड प्लीज. थैंक यू. Taral Munshi sir, thank you everyone. Thank you all the speakers of the day for joining us on this topic, expansion of consciousness or expanding our consciousness. I've got a bad throat, so I would be speaking slow and low probably. So what I wanted to start with is, when we talk about evolution, it is the most fruitful or a brilliant idea given by science to the modern world. We all know about evolution. We all know, like, we grow up from different levels to upper levels, and we are hopeful, we are positively aware, we are conscious that yes, we are growing day by day. So this is one of the best idea science has given to our world, that is evolution. We all know that. But
since there is this materialistic bias to our scientific thought, this idea of evolution has remained a half truth, and we probably have not understood it properly. And that is why it is important that we deep dive into the principles or the fundamentals of occult science, which will, you have to excuse me for a minute, I have to charge my laptop before you. Yeah, sure. Yeah. Okay. Now it's working. Fine. So we have to actually deep dive into the occult philosophy and fundamental teachings of occultism. And as we all know, before we start talking about this body and this existence world in this universe, we are all aware that it all starts from a solar system of which we are a part. That is why we categorically say for this evolution, solar system is the vast theater, because something which is visible, we only start experiencing it, believing it, and fundamentally realizing this. That is why we cannot deny our existence if we thoroughly understand this solar system, which is a theater wherein this evolution is visible. And also, as students of theosophy, we have learned that it is a sevenfold constitution which is interpenetrating different worlds in which we cognize with our senses. And then for each of the seven-folded constitution, we experience things layer by layer. That is why when we chose this topic, expanding our consciousness, we all should know, like, consciousness can only be experienced or can only be realized when we perceive it correctly. In a layman language, if I say it. So this seven-folded constitution of our bodies, our levels, our spheres, whatever we call it, through this we can expand our consciousness. And these seven-folded worlds that we call seven planes on which we operate. We all know that this is this physical body through which we are operating. We are, cognizing with our senses, and that is why we understand the basics of the physical body. But then there is this world next to the physical, into which we all pass in either in the sleep on a daily basis, and of course after our death, which we call the astral plane. And that is related to our feelings, our emotions, our desires. And then that there is this consciousness operating in the different body. Then we spend most of our time between two incarnations. When we die and when we get into the other body, we move to the next plane, that is our mental plane. And we operate through our thoughts there. And then we all know that then there is Buddhic, then Atmic, Anupadaka, Adi, all these planes are there in succession. And those are the higher planes are related to our spiritual and eternal being. And these are the sources of our highest spiritual knowledge and powers. That is why we pass on from one plane to the other. And this is how we take respective vehicles of consciousness and operate through them. So what we see around in this universe, throughout all the kingdoms, everything has a consciousness. We can't deny that, because sometimes we experience it directly, sometimes we realize a bit later, but we realize that there is this consciousness operating in everything in the universe. We cannot say this is a dead thing, or this is a blind matter, or this is an unconscious matter. No, consciousness is already there in every state of the thing, in stones, in leaves, in animals, in human beings, in superhumans, whatever we experience through this different lives. And that is why we say consciousness is sleeping in minerals, dreaming in plants, waking up in animals, and in humans, we have this self-aware consciousness.
That is why it is there in all planes. Since we all know, or maybe if there are few people who are new to this forum today, who are not aware of the 7 bodies, quickly for their reference, we can say there is this physical body, and then there is this astral body, which is a bit subtler counterpart of the physical body. And then there is this vital pranic body. Then there is this all our passions and desires, we call it our Kamic body. Then this Manasic, this intelligence part, then the spiritual Buddhic, and then the highest one, the higher self. That is why we say there is this lower self and higher self of me, and the higher self is more conscious, in the sense is self-conscious, whereas the lower self is taking time to be self-realizing. So the outermost and densest of these vehicles is the physical body, which we see and experience on a daily basis, mostly by all human beings. The vehicle with which we are most familiar is our physical body. That does not mean because I'm not able to experience the other 7 planes, I would simply deny that. No, let us understand it step by step. Let us practice to know these bodies. There are different practices. I'm not getting into that, but yes, there are prescribed methods and practices through which we can experience all other bodies too. And that is why the self-awareness or the consciously being conscious is a term we use generally. That when we are consciously conscious, because subconsciously certain things happen, but we are not able to express that, or we not experience that. And we are only sticking to this physical body. Even if we are just talking about this physical body, we must know that when we are keeping this physical body under our self-control, I'm talking about the higher self here, because it's like a horse. And if we are as a horse trainer, and this physical body is like a horse, and my higher self is a horse trainer, as the horse trainer knows the nature of the horse and also knows how to keep the horse under control. Similarly, when we know the tendencies of our physical body, the very operation and structure of the physical body, we will be in a position to self-control it, and we can probably experience it healthily. So we must know and understand our physical body well if we wish to have for our use an efficient instrument, because it's a vehicle only. So most of the time, instead of experiencing it as this is I am doing this, if I kind of start looking at my body and experience that this is my body and this is how my body is responding, if we start to disassociate that particular I which we associate with the physical body only, if we start disassociating that, we will start actually looking at the physical body objectively. Most of us try to do it. Some people are faster in doing this. They are very objective in understanding the functions and reactions and responses of the physical body, and that is why they kind of smoothly and easily master the body. Then there are people who are still struggling. It could be like hunger, or feeding the physical body whenever the physical body wants, or when the physical body is a bit lazy and the body doesn't want to operate, and the body doesn't want to wake up, the body doesn't want to do things properly. So all this laziness, hunger, or similar tendencies of the physical body, which we think this is me and this is my thing, we have to objectively look at it and saying that no, it's my body which is requiring this, because physical body is nothing but a portable instrument, and it is catching all kinds of vibrations. It could be light, it could be sound, it also catches words. That is why we say sound affects the physical body. So physical body responds to anything which is having vibration. Sound has vibration, light has vibration, and sometimes someone's thoughts also, which has vibration, catches the physical body. People fall sick when I have seen people, there are panic attacks, there are anxiety attacks. So the body responds to such things. So anything which is vibrating will affect the physical body, and through the sense organs, all these vibrations are carried.
So at least first thing, being conscious we can do is, we could probably try saying that instead of I am doing this, I am thinking like this, I am eating or I am feeding something, we can always start talking about my physical body is doing this. I mean, it sounds funny sometimes. I mean, we might find it a very strange way of speaking, but at least let us say it to ourselves initially. When we start saying these words to initially ourselves, I think the self-control journey will start from there. Many people, they overeat. Like there is this overeating, overthinking, overworking. These all start because we are slaves of the body. We think our body is leading us, but no, the body is just an instrument. So that consciousness, when we start uh, relating to, we would probably have a good self-control on the physical body. And then moving forward, we would also know what is this self then? Because every time we are saying, okay, I am controlling it, that I is the self, not the pity I-ness, the higher thing, if we say. So that is basically, in Sanskrit, there is this word Atma or Atman, and from the English translation of that is self. And in Theosophy, we always write it self with a capital S is the higher self to denote the higher thing. So it is not our personal or individual, small self, but it is our higher self, our divine self. So when we are aware or we are consciously relating to that higher self, because we have been reading about it in the Upanishads, there is this Bhagavad Gita who's talking about in Vedanta philosophy, in Hinduism, people talk about higher self. And also we know that that is our true self. Everything other than that higher self is false, is an illusion. We are doing things assuming that this is my true self, but that is not. So to have a self-control, or even if we are talking about different bodies, to understand the higher self is also very important. The moment we understand it, parallelly we will see that our activities, our thoughts, our feelings are actually getting different vibes. Now, now that we are talking about the higher self, we should also know how this self, higher self, operates through different bodies and at what level. Because we talked about the 7 bodies, we should also know there are different sheaths which actually grow up, evolve to become the body. What are these? We all know that. I mean, I'm just repeating whatever you already know. In Vedantic tradition, we also know that there is this Annamayakosha, Pranamayakosha, Manomayakosha, then there is Vignanamayakosha and Anandamayakosha. These are sheaths. Physical body is Annamayakosha. It's food, sheath of food. So it's more of the food that we give to this body for staying, for making it healthy, staying healthy. And then Pranamaya is the prana itself, the prana kosha. It gets developed into the higher body from the physical. Then Manomayakosha is from Manas or Kama Sharir. So this is how the bodies are developed. So 5 sheaths then turn out to be our 7 bodies. So why we should understand this? Because when we understand the structure and how they are formed, it will be easy for understanding how we communicate through these bodies in different vibrations at different levels for the higher consciousness. Now that I have been talking about this physical body, I would parallelly say that there is this astral body, which is a subtler physical body, you may say that. A physical body which is very dense. The subtler part is astral, and the physical vibration which reaching the indwelling consciousness, these are reflected inward, and the sensations are perceived as a, whatever we do as a physical body, there is, out of that, there is some pleasant, unpleasant, happy, bad, good, unhappy. All these sensations happen through whatever we do in the physical body. Be it, for example, we take a food, we use something for the physical body, then we feel good about it. So all the subtler things like the feelings and
and the sensations we got, we get from this physical body operations. It could be pleasure, it could be pain, it all operate in the astral body. And what happens? A fundamental change occur in our consciousness accordingly, along with the feeling of pleasure or pain. And when we start feeling a pleasure or pain, interestingly, we all realize that there is this want of experience of that pleasure again and discarding that pain. So it is not always wanting something. There is also a case of not wanting something. So that is very interesting. So when we look at our physical and astral vibes, we would see that we are doing something in physical body, but then we have vibes in the astral body as well, be it positive or negative feelings. And based on that, we develop our desire. We say that, okay, Kama Sharira, there is desires and all, but this is what it fundamentally, if we look at it, we'll see the fundamental things about it. So our action, then there is this sensations out of that action. Then if there is something good happening, then I'm desiring this more and more. And if something is not so good, I really want to discard it. This happens with almost all of us. An example I want to quote here, like I want to have a meal. A particular dish is really tasty for me. And I get that sensation, which is a pleasant one after having that food. I finish the food, but the sensation disappears with the memory, but there is this hidden vibe or hidden sensation which is there. Immediately when I see the same dish again, that sensation in my memory starts working. And then I feel like, okay, I'll have it more. Or if I go to a place and I see something and I get attracted to that, the very sensation which is stored in that memory, next time I see that object, I want to have it more. This is a very thin and a very solid connection between our action, the object through which we are acting or up to which we are going through that action. And then there is this pleasure or pain kind of a sensation. Out of that sensation, the desire of having or not having is coming up. Now, when we now talk about the desire thing, there is also in theosophy we have been taught that there is this desire which is driving you towards something, but then there is this willpower also which helps you to stay there. Okay. Not being swayed by something, or having that self-control needs a great demand of willpower. So logically, if we see, there is this desire which is drawing my attention, my vibes, everything towards an outside thing. And that is why I want to have it more and more. Whereas the will is also a strong thing, strong vibe, but there is more towards my inner self, more towards a determined thing. So that is why we have to understand what is my desire and what is my will. Because in desire, it could be a simple gratification of my sensual desire, or it could be there is a desire that I want to help my near and dear, my family. There could be this strong desire to serve my nation as a citizen, or there is this desire to serve humanity at large. So it all depends. But then there is also this desire of being strong in my willpower so that I could be one with the will of the Supreme. So this is how from a lower level of desire, we move towards the higher level of willpower. So, Sulina ji, part 1 almost over. I'm just concluding that. So far we talked about physical body's operation, how we get vibes and sensation out of that, and out of that experience, how it stores up in our memory, and then we get into the desire and will mode. So we will be talking about the other bodies and the consciousness part, how it operates through different planes and bodies in our second part. Thank you. Yeah. Thank you, Sulina ji. Right on time. आपने पहला पार्ट खत्म किया. वेलकम स्मिता जी, आपका स्वागत है. और स्मिता जी भी बहुत दिनों बाद पधारी हैं.
IIT बॉम्बे से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर, सॉरी सर, Sir, you are wrong. या आई एम रॉन्ग, जस्ट सर, या उन्होंने MA किया है हिस्ट्री में और ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है पर्सनल मैनेजमेंट में। साथ ही वे भुवनेश्वर सिद्धार्थ लॉज की सदस्य हैं। वे कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रही थी HR मैनेजर के तौर पर, और वो दिल्ली में कर रही थी। अब दिल्ली छोड़कर वापस अपने यथास्थान शायद भुवनेश्वर आ गई हैं, और थियोसॉफी को और लाभ मिलेगा इस उनके समय से। जीवन में हमेशा नई चीजें सीखने को तैयार रहती हैं। थियोसॉफी के दर्शन में और दर्शन को लोगों तक पहुंचाने में उनका दृढ़ विश्वास है, और उनका जुनून जो है वो रग रग में उनके जो बसा हुआ है वो है अभिनय है। बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं, और शॉर्ट फिल्में, बड़ी फिल्में, सीरियल्स करती हैं। अभी भी उनका उड़िया में शूटिंग चल रहा है। आइए, आपका स्वागत है। आज का जो हमारी चेतना का विस्तार विषय है उसे उड़िया में कहिए। धन्यवाद। नमस्कार। जहाँ तक नमस्कार। नमस्कार, जहाँ तक उन्होंने लिया है डिजायर के पहले तक वही तक लीजिए। या Thank you. या मेरा नमस्कार सबको। Actually, thank you to Sister SUVRALINA by choosing this beautiful but difficult topic, expanding our consciousness. Like consciousness ऐसे ही एक बहुत difficult है, उसके साथ it's expanding. Anyway, I'll try to explain in Odia in a right way. So let's see. Okay. Yeah. So expanding our consciousness. ଆମର ଚେତନାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିବା, ବିସ୍ତାର କରିବା, ପ୍ରସାର କରିବା। ବିଜ୍ଞାନ ଆମର ଆଧୁନିକ ବିଶ୍ୱକୁ ସବୁଠାରୁ ଉଜ୍ଜଳ ଓ ଫଳପ୍ରଦ ବିଚାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବିବର୍ତ୍ତନ, ଇଭଲ୍ୟୁସନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବିବର୍ତ୍ତନ या क्रम विकास तो କୁହାଯାଏ। तो विज्ञानର ये ଆମର ଆଧୁନିକ ବିଶ୍ୱକୁ ये तार गोटे गिफ्ट, किंतु सी हमको ये जो चिंताधारा, जो विवर्तन, जो इवोल्यूशन विश्वर, से भौतिकवादी को विश्वास करी तार से हमको अधा जिनस देखी, आमे तार अधा जिनस को देखीचु। किंतु आमर ये जो अकल्ट साइंस, जाको आमे गुड़ विद्या, गुप्त ज्ञान, विज्ञान बोली कहूँ, ये यार जो अदर हाफ, जो सत्यर जो अदर पार्ट ऑफ द ट्रूथ, ये हमको हम आगे आनी। तेणु आम ये जो गुप्त विज्ञान व गुड़ विद्या, अकल्ट साइंस द्वारा आमे ये जो इवोल्यूशन विषय रे भल कि जानी पारिछे। आउ एक मौलिक शिक्षा होची आम सौरभ मंडल। सौरभ मंडल दैट इज सोलार सिस्टम, राइट। तो सौरभ मंडल रा 7टा स्तर अछि, 7 प्लेन्स, जाको आमे लेवल स्तर ओडिया रे स्तर बोली कहिबा, तार अछि। एगुडी को गोटे जगत को प्लेन्स कहा जाए, 7 प्लेन्स कहा जाए, जोटे कि आरंभ आमर भौतिक, जोटा आमर फिजिकल बॉडी। देन आमर आसुची परवर्ती ए होची तार आस्ट्रल, आस्ट्रल कहा जाए। एवं ये जो आस्ट्रल बॉडी अच्छी, ये आमर भावना, इच्छा और आवेग सहित जड़ित। भौतिक जगत सहित आम जानी आमर फिजिकल बॉडी, आमर माने जहाँ आम करू, आम बिल्कुल फिजिकल बॉडी को हमें भौतिक शरीर या भौतिक प्लेन बोली कहू। तापर होची आस्ट्रल, आस्ट्रल रे आम भावना, इच्छा और आवेग सहित जड़ित। परवर्ती उच्चतर जगत, जो थे आम आमर समय अधिकांश भाग दुईटी अवतार मध्य, मतलब दीटा आम जो इनकारनेशन हुए, दीटा जन्म हुए, ता मध्य जो टाइम बीतऊ ताकू कहती मानसिक स्तर, मेंटल, एवं यह आमर चिंताधारा सहित जड़ित। तापरे क्रमागत भाव में बुद्धिक, आत्मिक, अनुपादक और आदि, एमिति आमर टोटल 7टा प्लेन अच्छी। एगुड़िक आमर आध्यात्मिक एवं शाश्वत सत्ता सहित जड़ित, एवं आमर सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान और शक्तिर उत्स, एवं एही प्रत्येक स्तर जड़े मनीषर चेतनार एक निर्दिष्ट चान अच्छी। ये जो आमर जो ये 7टा जो समस्त पदार्थ में 7टा प्लेन या जो भी देखिले आमे, ये आमर 7टा स्तर रे जाए।
समस्त पदार्थ रे सबु जिनस रे चेतना अछि चेतना ये सचेतन भी अछि जेहेतु आमे चेतनार कौनसी संकेत को अनुभव करूना किंबा कि आमे ताको फील करि पारेनी कि देखि पारेनी ता माने नुहे जे आमे ये कहिबानी कि ये जिनस रे चेतना नाही यार चेतना शक्ति नाही चेतना खनिज पदार्थ रे सोई थाए उद्भिद उद्भिद स्वप्न देखे उद्भिद रे स्वप्न देखे पशु मानक मध्य रे जागृत हुए एवं मनीष मानक मध्य रे आत्म सचेतन होई जाय तेणु चेतना सबु जगार अच्छी सबु पदार्थ रे अच्छी मनुष्य मानक मध्य रे भौतिक शरीर ठारू आरंभ करी आत्मा पर्यंत विभिन्न नीति सहित मेल खाउथिबा चेतना चेतनार 7टी अवस्था अच्छी चलंतु मानव शरीर ठू गठन बुझिबा गोटे हला शारीरिक दैट इज भौतिक शरीर देन एस्ट्रल भौतिक शरीर सूक्ष्म सूक्ष्म प्रतिरूप एटा देन प्राण शक्ति जाको जीवन शक्ति कहा जाए देन कामिक माने पशु आवेग इच्छा तो कामिक देन मानसिक मानव बुद्धि अहंकार ईगो देन बुद्धिक आध्यात्मिक आत्मा देन आत्मिक आत्मिक मतलब उच्चतर आत्मा सेल्फ जो सिस्टर्स बोले भी कहते द कैपिटल एस सेल्फ तो ये जो बॉडी आमे हमर व्यवहार पाई हमर ये जो फिजिकल बॉडी ताको आमे यूज करू सब जिनस पाई जदि आमे किछि कोनोसी भौतिक शरीर को भलो भाबे जानिबा और बुझिबा चेष्टा करिबा तामने प्रथमे हमर भौतिक शरीर को भलो कि बुझिबा जेमते एक उदाहरण देइतले जेमते गोटे घोड़ा चालक ता घोड़ार प्रति घोड़ार सब नियम या तार सब स्वभाव को बुझी थाए घोड़ा चलाइबा पूर्व सो दैट से कंट्रोल करि पारे सेमिति आमे हमर बॉडी रो सब जिंस को बुझिबा भलरे दरकार जोथि पई आमे हमर शरीर को हमर स्थूल शरीर को ए भौतिक शरीर को आमे हम निज हातर कंट्रोल ले आनी परिबा तेणु हमको भौतिक शरीर कार्य को अति स्पष्ट भावे हृदयंगम करने को हेबो यह उपकरण जहाँ साहाय्य जीवात्मा भौतिक सूत्रर सहित जोगाजोग आसंती मानव आत्मा दैट जीवात्मा अति आत्मा परमात्मार आंशिक अभिव्यक्ति दिव्य वास्तवता विवर्तन चक्र दे गति करिया परे विषयगत भाव पृथक हो जाइछि भौतिक शरीर एक बाहना एक माने एक इंस्ट्रूमेंट जहाँ आलोक और ध्वनि इत्यादि को निजर इंद्रिय माध्यम भीतर को नहीं जीवात्मा को भौतिक जगत रे रहिबा को साहाय्य करि थाए आमे निजको भौतिक शरीर सहित चिन्हट करिबारे एते अभ्यस्त जे एग्जांपल से दउथिले आमे सबले कहू जे मु एहा करिछि मु सेठा को जाउछि मो जो एटा हेइछि किंतु आमे जदि आमे कहू जे मु मोर भौतिक शरीर को एहा करिबाकू कहिबाकू करूछि कि मोर भौतिक शरीर सेठा को नउछि एटा नेचुरली हमको सुनिबाकू टिके माने टिके अबाग्या अडुआ लागिबा कारण हम सेठा अभ्यस्त नुह किंतु प्रकृति हम भौतिक शरीर द्वारा आमे काम करोउछे ठीक है ना तेणु किंतु आमे अभ्यस्त कहिबारे जे मु करूछि मु जाउछि कि मु खाउछि मु देछि सो ए जो हमर उच्चतर आत्मा दैट हायर सोल ये एक विश्व व्यवस्था सहित जड़ित एक शब्द किंतु यार मौलिक आधार एक शाश्वत सर्वज्ञ सचेतन और बुद्धिमान जीव को वर्णना करे जी जे प्रकृत आत्मा उच्चतर आत्मा आत्मा होची ब्रह्मांड एवं एक आत्मार अविच्छेद्य किरण संस्कृत शब्द आत्मा किंबा आत्मन जार आक्षरिक अर्थ जार अर्थ होची सेल्फ कैपिटल एस ताको हम ओडिया रे कोन कहबा आत्मा निजर आत्मा सेल्फ कैपिटल एस ताको ओडिया रे एग्जैक्टली कोन कहते प्रकृत वर्ड सेटा मु टिके जानि परलिनी एहा हमर व्यक्तिगत किंबा व्यक्तिगत आत्मा को बुझाए नहीं जो कैपिटल सेल एस सेल से हमर व्यक्तिगत आत्मा को बुझाए नहीं वरन हमर उच्चतर आत्मा हमर दिव्य आत्मा को बुझाए आत्मा उच्चतर आत्मा और आत्मा ये सब एक यह को प्रायतः केवल आत्मा भाव में मध्य उल्लेख करा जाए जहाँ को उपनिषद भगवत गीता
एवं साधारण भावरे हिंदू धर्मर वेदांत दर्शन रे शिक्षा रे मध्य कुहा जाए जेउठारे एही प्राचीन शिक्षा उच्चतर आत्मा प्रथम एवं सबुठारु प्रमुख भावरे मिली थाए। Thus, although there are many souls, there is only one spirit. आमे कहू ना समस्तकर सोल अछि किंतु स्पिरिट दैट इज द सेम थिंग बट दैट इज वन स्पिरिट एंड दैट इज वन सेल्फ कैपिटल ए सेल्फ एंड द सुप्रीम अल्टीमेट रियलिटी जो आमे कहू द सुप्रीम वन। जेपरी माने एठी गोटे उदाहरण देखिले जेमती भगवत गीता रे कृष्ण अर्जुन को कहते जेपरी एक सूर्य एक एवं पृथ्वीर समस्त उपरे तार आलोक समान समान पड़ी थाए सही परी ये जो आत्मा सी भी एक वो प्रत्येक आत्मा को समान भाव में आलोकित करे। वेदांत परंपरा को अनुसरण करी आत्मा किंबा आत्मा उपरे पांचोटी आवरण धारणा है। गोटे होची अन्नमय कोश खाद्यर आवरण सेटा भौतिक शरीर ପାଇଁ दरकार हुए। सेकेंड होची प्राणमय कोश प्राणर आवरण देन मनोमय कोश निम्न मानस एवं काम ପାଇଁ आवरण देन विज्ञानमय कोश उच्चतर मानसर आवरण आनंदमय कोश बुद्धि ପାଇଁ दैट्स बुद्धि कौन कहती हाँ बुद्धि ପାଇଁ आनंदर अस्तरण। शरीर एवं आवरण मध्य मुख्य पार्थक्य होची जे प्रथमटी होची चेतनार संगठित वाहन आवरण होची पदार्थर एकत्रीकरण जहाँ चेतना को कंपन जोगाजोग करने को सक्षम किंतु चेतनार स्वाधीन चेतना गोटे स्वाधीन जान नुहे विवर्तन या इवोल्यूशन प्रक्रिया सहित आवरण गुड़िक शरीर रे परिणत हुए। एबे चलो कथा अबाउट द एस्ट्रल बॉडी। एस्ट्रल बॉडी विषय रे आलोचना करिबा। अंतर्निहित चेतना रे पहुंचुथिबा शारीरिक कंपन गुड़िक आभ्यंतरीण भाव में प्रतिफलित हुए एवं समवेदना गुड़िक सुखद किंबा अप्रीतिकर दुख भाव में विवेचना करा जाए एवं एगुड़िक अनुभूति रे रूपांतरित हुए जहाँ आनंददायक किंबा जंत्रणादायक से बुझे भी एस्ट्रल बॉडी में क्या करे माने हमर जो हमर एक्सपीरियंस हुए जहाँ हम एक्सपीरियंस करू सुख की दुख हमर से एस्ट्रल बॉडी रे हमें ताको कौन करू ना फील करू। जेमती से गोटे उदाहरण देते गोटे पर्टिकुलर खाद्य से खाई खाद्यटा भल लगी तार ये टेस्ट मन में रही जाइए तेणु से पर से खाद्यटा को देखिए से खाद्यटा खाई इच्छा हम कि गोटे कुआडे जाऊँ गोटे भल फुलर बास्ना आसूची तो से फुलर बास्नाटा मन में नाकरे एत जोरे पशि जाइए से चाहिए से घरे लगे कि माने से टाइप तो सेटा आकर्षण तर गोटे गोटे भल अनुभूति तो किंतु से को माने कुहा जायछि तमरे अनुभूति भल हो कि खराब हो जहाँ भी हो तमे ता सहित माने ताको ग्रहण तो करबा कथा किंतु ता सहित एते माने एते बांधी हवा कथा नुह कि जा तमे छाड़ी की जाई परिबनी तेणु बांधी हवा को मना करा जायछि ताको एते स्ट्रांगली बांधी की निज पाखरे रखिबा को भल हो मंद ताको सेटा मना करा जायछि। वर्तमान आमे इच्छा शक्ति और इच्छा शक्तिर संपर्क विषय आलोचना करिबा। कामनार मौलिक स्वभाव हेउछि जणे व्यक्ति को सही वस्तु आड़क आकर्षित करिबा जहाँ तांको आनंद दिए और जंत्रणादायक वस्तु गुड़िकरु तांको ठारु दूरे रखे। एही आकर्षण किंबा विकर्षण शक्ति उपस्थिति को दर्शाए एवं एही शक्ति सारांश रे इच्छा शक्ति सहित समान बोली देखा मिली। से इच्छा शक्ति को 5 भाग डिवाइड करछन्ती। गोटे हला इंद्रिय तृप्ति पाई इच्छा जोटा मते खाइयो भल लागे पिंधिया को भल लागे बुलिया को भल लागे इंद्रिय निज इंद्रिय तृप्ति पाई इच्छा देन निज परिवार को सहाय्य करबा को इच्छा। नेक्स्ट नेचुरली हमें चाहू आम परिवार को मु करछु मो परिवार पाई मु करबी। निज देशर सेवा करबा इच्छा आ टिके एक्सपांड कला कि परिवार को मु देश पाई चिंता कली। मानवतार सेवा करिवार इच्छा से देश ठू भी आगु क्रॉस कला आ टिके आगु को गला कि मु पूरा मानव समाजर करबी। तापरे द लास्ट वन इज निजर इच्छा को सुप्रीम इच्छा सहित परिणत करिबा।
जो आम अल्टीमेट जो सेल्फ सुप्रीम अच्छा तांकर इच्छा शक्ति सहित निज इच्छा शक्ति को एकत्रीकरण करिबा। दिस इज माय फर्स्ट वर्ड। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी। आप उड़िया में बोलती है लेकिन सारी चीज पता नहीं कैसे एक्सप्रेशन से आपके संवाद से समझ में आ जाती है। बहुत ही बढ़िया। कौस्तुभ भाई थैंक यू। आपका स्वागत है। और लगता है पूना में भी ठंड है। अ, कौस्तुभ भाई का एक छोटा सा परिचय दे दूं। आईआईटी बॉम्बे से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर 1981 में पास किया। एचआर के पद पर भी उन्होंने कार्य किया है। वर्तमान में वो महाराष्ट्र थियोसॉफिकल फेडरेशन और पूना लॉज के दोनों के सचिव हैं और बहुत ही सक्रिय सचिव हैं। और यही नहीं, वो पारिवारिक परंपरा से भी थियोसॉफिस्ट हैं और उन्हें ब्रह्म विद्या में आने की जो प्राप्ति है वो विरासत में मिली है। लेकिन उसी के साथ इतने एक्टिव हैं कि नित्य कहीं भी रहते हैं वो उस विषय में कुछ जोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे हाल ही में एक अनुभव हुआ कि हम लोग वाराणसी में मिले थे गोल्ड रिव्यू के दौरान। तो कहीं ना कहीं एकदम व्यस्त थे। पता लगा कि जो हमें सर्टिफिकेट मिलता है मेंबरशिप का, उसका उन्होंने एक अच्छे से ऐसा नवीनीकरण किया कि वो ज़्यादा बेहतर रूप में दिख सके। और वो इंस्टेंटली वहाँ पर इंडियन सेक्शन में गोयल जी और सब लोगों ने एग्री किया कि ये वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है और शायद अब इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। तो बस कौस्तुभ भाई, आप इसी तरह थियोसॉफी को बढ़ाते रहें। छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। और आज हिंदी में आप अपना पहला भाग कहिए। धन्यवाद। हिंदी नहीं, मराठी। आपने तो मराठी लिखा है। वॉल्यूम थोड़ा जोर से। आपने मराठी में कहने के लिए बोला है हमें। नहीं सर, हिंदी में। ओडिया में हो गया ना ये। You have told me to talk in Marathi anyway. Sorry. ठीक है, चलिए मराठी में हो जाए आज। Okay. Namaskar and thank you. Thank you for the opportunity given. I have used the opportunity to translate it in Marathi, and I have also gained quite a lot while reading it, while translating it. So thanks for that as well. So let me start. आपल्या चेतनेचा विस्तार करण्याची विचार पद्धती. विज्ञानाने आधुनिक जगाला दिलेली सर्वात तेजस्वी आणि फलदायी कल्पना म्हणजे उत्क्रांतीची कल्पना. परंतु पहिल्यापासून वैज्ञानिक विचारांना दिलेल्या भौतिकवादी पूर्वग्रहामुळे ही कल्पना पूर्णपणे सत्यतेत उतरू शकली नाही आणि त्यामुळे मानवी जीवनातील त्याचे खरे महत्त्व हिरावून घेतले गेले. गूढ विज्ञान उत्क्रांतीच्या कल्पनेचा सत्याचा दुसरा भाग प्रदान करते आणि अशा प्रकारे कल्पना खरोखरच गतिमान बनवते आणि त्यामुळे ती कल्पना जीवन समजून घेण्यास खूप मदत करते. गूढवादाची आणखीन एक मूलभूत शिकवण अशी आहे की आपली सूर्यमाला, जो उत्क्रांतीचा एक विशाल रंगमंच आहे, त्याच्या घटनेत 7 स्तर आहेत. त्यातील एक स्तर भौतिक जग आहे, जो आपल्या इंद्रियांना गोचर आहे. त्या पलीकडे उत्तरोत्तर सूक्ष्म पदार्थांची आणखी 6 जगे आहेत. या जगांना लोक असे म्हणतात. भौतिकाच्या पुढील जग, ज्यामध्ये आपण झोपेत आणि मृत्यूनंतर जातो, त्याला सूक्ष्म लोक म्हणतात. तो आपल्या भावना, इच्छा आणि भावनांशी संबंधित आहे. पुढील उच्च जग, ज्यामध्ये आपण आपल्या 2 जन्मांमधील वेळेचा मोठा भाग घालवतो, त्याला मानसिक लोक म्हणतात. जो लोक आपल्या विचारां तसेच आपल्या आध्यात्मिक आणि शाश्वत अस्तित्वाशी संबंधित आहे, म्हणूनच आपल्या सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञानाचा आणि शक्तीचा स्रोत आहे. या प्रत्येक लोकासाठी माणसाकडे चेतनेचे संबंधित एक वाहन म्हणजे शरीर असते. विश्वातील प्रत्येक गोष्ट, त्याच्या सर्व स्थितींमध्ये त्याची जाणीव असते. आपल्याला चेतनेचे कुठलीही चिन्ह दिसत नाहीत किंवा आपण ओळखू शकत नाही, म्हणून आपल्याला त्यांच्या चेतना अस्तित्वात नाही असे म्हणण्याचा अधिकारच नाही. मृत किंवा अंध अशी कोणतीही गोष्ट नाही, कारण या जगातील एकही गोष्ट अंध किंवा विशुद्ध असूच शकत नाही. चैतन्य खनिजांमध्ये झोपते, वनस्पतींमध्ये स्वप्न पाहते,
प्राण्यांमध्ये जागृत होते आणि मानवांमध्ये आत्मजागृत होते. मानवामध्ये भौतिक शरीरापासून आत्म्यापर्यंत विविध तत्वांशी संबंधित चैतन्याच्या 7 अवस्था आहेत. चला आपण मानवी शरीराची रचना समजून घेऊया. भौतिक शरीर पहिलं. दुसरं, सूक्ष्म भौतिक शरीराचा सूक्ष्म भाग. तिसरं, प्राणिक शरीर जे चैतन्यमय असतं. चौथं, कामिक, प्राण्यांची आवड आणि इच्छा. पाचवं, मानसिक, मानवी बुद्धिमत्ता आणि अहंकार याच्यात असतो. सहावं, बौद्धिक, आध्यात्मिक आत्मा याच्यात वास करतो. सातवं आहे आत्मिक, ज्याला उच्च स्व म्हणजे हायर सेल्फ असं म्हटलेलं आहे. ज्या वाहनाशी आपण सर्वात परिचित आहोत ते म्हणजे सर्वात बाहेरील आणि घन भौतिक शरीर. जोपर्यंत आपले जीवन भौतिक लोकांपर्यंत मर्यादित आहे तोपर्यंत आपल्याला यातून खूप कामे करून घ्यायची आहेत. प्रशिक्षकाला एखाद्या घोड्याचा स्वभाव अगदी बारकाईने माहीत असतो आणि हे ज्ञान प्रशिक्षकाला त्या घोड्याला सहजपणे नियंत्रणात आणण्यास मदत करते. किंवा एखाद्या शिक्षकाने आपल्या नवोदित शिष्याला योग्य मार्गाने मार्गदर्शन करायचे असल्यास त्याचा स्वभाव पूर्णपणे त्याने जाणून घेणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे जर आपल्याला आपल्या वापरासाठी एक कार्यक्षम साधन हवे असेल जे पूर्णपणे आपल्या नियंत्रणाखाली असेल तर आपण आपले भौतिक शरीर चांगले समजवून व जाणून घेतले पाहिजे. त्यासाठी आपल्याला भौतिक शरीराचे कार्य अगदी स्पष्टपणे जाणवले पाहिजे. हे एक साधन आहे ज्याच्या साहाय्याने जीवात्मा भौतिक लोकांच्या संपर्कात येतो. मानव म्हणजे आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा आणि मग शेवटी दैवी वास्तविक आंशिक अभिव्यक्ती. उत्क्रांती चक्रातून गेल्यानंतर व्यक्तिनिष्ठपणे ही अभिव्यक्ती विभक्त झाली आहे. भौतिक शरीर हे दुसरे तिसरे काही नसून एक सोबत नेण्यासारखे उपकरण आहे जे इंद्रियांद्वारे प्रकाश, ध्वनी इत्यादी कंपन्यांना पकडते आणि ही कंपने आतमध्ये घेऊन जाते. त्यामुळे जीवात्म्याला भौतिक जगाच्या विविध वस्तूंचे आकलन करणे शक्य होते. स्वतःला भौतिक शरीराशी एकरूप बघण्याची आपल्याला इतकी सवय झालेली असते की आपण नेहमी म्हणतो मी हे करते आहे, मी तिथे जात आहे. असं म्हणण्याऐवजी असंही म्हणून बघा, मी हे करण्यासाठी माझे भौतिक शरीर बनवत आहे, मी माझे भौतिक शरीर तिथे नेत आहे. थोडं विचित्र वाटेल सुरुवातीला, पण त्याचीही तुम्हाला सवय होईल. हायर सेल्फ ही एक विश्वास प्रणालींची संबंधित एक संज्ञा आहे, परंतु त्याचा मूळ आधार शाश्वत, सर्वज्ञ, जागरूक आणि बुद्धिमान व्यक्तीचे वर्णन करतो जो स्वतःचा वास्तविक स्व आहे. उच्च आत्मा एक स्व हा विश्वाचा अविभाज्य भाग आहे. संस्कृत शब्द आत्मा किंवा आत्मन चा शाब्दिक अर्थ स्व असा होतो. हे आपल्या वैयक्तिक किंवा वैयक्तिक स्वत्वाचा संदर्भ देत नाही तर आपल्या उच्च आत्म्याचा, आपल्या दैवी स्वयंचा संदर्भ देते. आत्मा, उच्च आत्मा आणि आत्मा या सर्व समानार्थी संज्ञा आहेत. याला सहसा फक्त स्व असे संबोधले जाते. ही प्राचीन शिकवण आहे. स्वतः प्रथम आणि सर्वात ठळकपणे उपनिषद, भगवद्गीता आणि सामान्यतः हिंदू धर्माच्या वेदांत तत्वज्ञानाच्या शिकवणींमध्ये हे आढळते. आपला खरा आत्मा हा आपला आवश्यक स्वभाव आणि आपल्या अस्तित्वाचा सर्वात वरचा भाग आहे. खरे तर परम स्वरूपात वैयक्तिक किंवा वेगळे असं काहीही नाही. अशा प्रकारे जरी अनेक आत्मे असले तरी एकच आत्मा, एक परम वास्तव आहे. भगवद्गीतेत कृष्णाने अर्जुनाला सांगितल्याप्रमाणे जसा एकच सूर्य या पृथ्वी तलावरती सर्वांवरती प्रकाशतो त्याचप्रमाणे एकच आत्मा प्रत्येक जीवावर प्रकाशतो. वेदांतिक परंपरेला अनुसरून आत्म्यावर
5 आवरणांची संकल्पना आहे. अन्नमय कोश, अन्नाचे आवरण किंवा भौतिक शरीर. प्राणमय कोश, प्राणाचे आवरण. मनोमय कोश, खालच्या मानस आणि काममानसाचे आवरण. विज्ञानमय कोश, उच्च मानसाचे आवरण. आणि आनंदमय कोश, बुद्धीसाठी आनंदाचे आवरण. शरीर आणि आवरणांमधील मुख्य फरक असा आहे की आवरण हे चेतनेचे प्रथम संघटित वाहन आहे, तर शरीर हे पदार्थांचे एकत्रीकरण आहे जे चेतनांची स्पंदने संप्रेषण करू शकतात, परंतु चेतनेला स्वतंत्र वाहक नसतात. उत्क्रांतीच्या प्रक्रियेत आवरणे ही नंतर शरीरे बनतात. आता सूक्ष्म शरीरांबद्दल बोलूया. अंतर्बाह्य चेतनेपर्यंत पोहोचणारी शारीरिक स्पंदने आतून परावर्तित होतात आणि संवेदना सुखद किंवा अप्रिय समजल्या जातात. त्या आनंददायी किंवा वेदनादायक भावनांमध्ये रूपांतरित होतात. या टप्प्यावर चेतनांमध्ये मूलभूत बदल होऊ शकतो. सुख किंवा दुःखाच्या अनुभूतीबरोबरच ते सुख पुन्हा अनुभवण्याची किंवा वेदना टाळण्याची इच्छा निर्माण होऊ शकते. ही इच्छा त्याच्या सर्वात सोप्या, सर्वात प्राथमिक स्वरूपात असते. आकर्षण किंवा तिरस्करणाचा समावेश असलेला हा बदल सूक्ष्म आणि मानसिक या दोन्हीशीही जोडलेला असतो. आपल्या उत्क्रांतीच्या काळात भावना आणि विचार यांच्यातील या परस्पर संवादांमध्ये अधिकाधिक मानसिक घटक प्रवेश करत असताना इच्छा अधिकाधिक जटिल होत जातात आणि आपल्या जीवनात वाढत्या प्रमाणात प्रमुख भूमिका बजावतात. आपण काही उदाहरणे घेऊया. समजा मी जेवायला बसलो. एखादा विशिष्ट पदार्थ रुचकर आहे आणि त्यामुळे होणारा परिणाम स्वाभाविकपणे आनंददायी असतो. जेव्हा मी अन्न संपवतो तेव्हा ती संवेदना नाहीशी होते, परंतु त्याची स्मृती त्याच पदार्थांच्या दर्शनामुळे किंवा कल्पनांमुळे भविष्यात कधीतरी ती संवेदना पुन्हा अनुभवण्याची इच्छा जागृत करू शकते आणि अशा प्रकारे मला त्या विशिष्ट पदार्थांची चव पुन्हा चाखायची इच्छा होते. दुसरे उदाहरण, मी फिरायला जातो आणि मला एक विशिष्ट वास येतो जो माझ्या वासाच्या जाणीवेला आकर्षित करतो. मी माझ्या मार्गातून बाहेर पडून ते फूल शोधतो ज्यातून तो गंध मिळतो आणि मग मला ते झाड माझ्या बागेत लावायची इच्छा होते, जेणेकरून मला त्या गंधाची अनुभूती पुन्हा पुन्हा अनुभवता येईल. विशिष्ट अनुभवातून जाताना आपल्याला आनंद वाटत असेल तर कोणतीही हानी होत नाही हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. आनंद हा शरीर व वस्तू यांच्यातील संपर्काचा नैसर्गिक परिणाम आहे, ज्यामुळे आनंद होतो. जेव्हा आपण एखाद्या वस्तूला आकर्षक किंवा तिरस्करणाच्या बंधनाने बांधून ठेवतो तेव्हा समस्या उद्भवते. आता आपण इच्छा आणि इच्छेचा संबंध हा विषय हाताळू. इच्छेचा अत्यावश्यक स्वभाव म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला आनंद देणाऱ्या वस्तूंकडे खेचणे आणि वेदना देण्यापासून दूर करणे. हे काही शक्तींची उपस्थिती दर्शवते आणि ही शक्ती इच्छाशक्तीसारखीच असल्याचे आढळले आहे. इच्छेच्या बाबतीत स्वतःची शक्ती बाह्य वस्तूंद्वारे ओढली जाते आणि ती आकर्षणी आणि प्रतिकर्षणावर अवलंबून असते, तर इच्छाशक्तीच्या बाबतीत ती कोणत्याही बाह्य उत्तेजनापासून स्वतंत्रपणे बाहेर पडते, स्वयं निर्धारित असते. अशा प्रकारे खालच्या स्तरापासून वरच्या स्तरापर्यंत इच्छा हळूहळू शुद्ध करणे आपल्या हातात आहे. कौस्तुभजी, desire is in second part. Okay. So thank you so much. Yeah. You can continue from here when your turn comes, sir. Thank you so much. Surlina ji, please go ahead with the English. Sure. So since I was talking about from desire to will, from the lower desires to the higher willpower. So as the interpreters and translators also rightly said, it is in our hand to gradually purify the desires from the lower to the higher level, because we are expanding our consciousness. So expansion should be from the lower to the higher.
the gradual elimination of these personal elements of these desires, which as an individual we tend to do in our actions, we must eliminate the lower things and make our actions purer and purer. And with this progressive elimination of personal desires, the will be established, because the will gain more power, more motivation for power to action. So that is why from lower desires to higher willpower is the expansion we should do. Now, since I was talking about physical body, astral, and all these desires and all, let us move to the mental body now. Mental body is the vehicle for our thoughts. We must first of all understand that it is necessary to concentrate upon the movement of the mind. We should understand where it is going, the objectivity and subjectivity of our mental movements. Most people who start practicing concentration or meditation, they would also say this, that during the short period of their mental exercise of concentration and meditation, they realize whether it went well or not. Many people complain, I could not meditate today, I could not concentrate today, or maybe generally I'm not able to meditate or concentrate. We must understand that that short period of concentration or meditation depends totally on a great extent on how we control and use the mind during the rest of the day. We cannot say rest of the day I will just wander around things, and if a person is allowing his mind to wander while doing his ordinary daily work, he can never be successful in concentrating. It happens with kids who go to school, it happens with people who work at offices, it happens with people who are homemakers. You ask anyone in this world, whenever in the rest of the period, the entire day-to-day activity, we are not able to control the movement of the mind or observe the movement of the mind, it will be really difficult when we think I should just sit and concentrate and meditate. No, it all depends on how we use the mind most of the time in the day. That is why unnecessary wandering of the mind will not help us in achieving that state of meditation or concentration. Because if we wander the mind throughout the day, it will set up a tendency to wander every time it's set free. And it's really difficult to control that. The mind is a creature of habits. Because we are habituated to wander, we cannot force it to concentrate. That is why we should practice in our daily basis, on a daily basis, in our day-to-day activity, observing the movement of the mind, what kind of a tendency it's acquiring, where it is going, what is the habit it is forming. Whenever we do that, whether the thoughts come from outside or are self-initiated, the mental body also need to be trained. So every time we are talking about somebody is training the mind, the body, the astral body, mental body, what is that somebody? What is that entity which is controlling this? That is our higher self. So if we wish to preserve our mental health and we really want to grow up healthy in the mental body and our mental exercises, we must learn to be positive to all kinds of thoughts that is occurring within and that's coming to us. The best way of dealing with an evil thought, if it is coming to us, turn our mind instantly to some other thought of a higher or noble character. So everywhere we are seeing moving or expanding from a lower to higher, be it a thought, be it our action, be it our observations, it will always help us expand and do it better. The mind can only think one thing at a time. And when we turn and twist the attention to something else, something higher, we will have this habit being formed. We will have this practice being occurring within us that whenever there is, I'm feeling low, I'm feeling negative. So if I have learned the art of shifting that to a positive notion, to a positive objectivity, then definitely we will have a control on our mental body. So on no account should we try to fight the thought by dwelling upon it. Many a times you would see, if somebody wants to fight a negativity, more and more you want to actually get rid of it, you get absorbed into it.
many of people I have heard from is, whenever I'm feeling low, the more I'm concentrating on that, the more I'm feeling depressed. We have to instantly alter the situation, and it is in our hand. So basically, we have to work on our tendencies. Nobody else will come and control my mind. I have to master it. I have to safeguard myself. I have to keep my mind healthy and positive, and nullify the negative notions that's coming. So moving up to the causal body, that seems to be the outermost vehicle of the ego, which is functioning through Atma, Buddhi, Manas, the higher triads. So it is the repository of all experiences. So interestingly, we are doing certain things, we experience, we store up in our memories, then we actually make a repository of all our past things. And that is why this, as a cyclic, we can call it a law, we can call it a rule of life, it all goes into a cyclic thing, and it reappears with a new body, with a new formation, with something additional to push the previous experiences, the previous memories. And that is why in each incarnation, there is something of the past. People call it, maybe in your past life you are like that. That is why you have carried it. It is actually the rule. There is always something of the past in whatever we are doing today, whatever we are thinking today, whatever we are saying today. Something of the past is actually flowing through that. We must observe this. Just as our feelings and sensations through our astral body, the mental body also captures the vibrations. We cannot see them, but these vibes are very subtle, and they accumulate. They accumulate, carry forward, and in our successive incarnations, there is a part of it which reveals. That is why all our past lives, past incarnations, or past lives in our future incarnations have a great connection. We call it, okay, it was my past karma, that is why it is happening with me. But this is it. We must understand it. If we read about Jataka stories of Lord Buddha, many stories reveal that he Gautama Buddha perfected his nature, his spiritual nature, by living a series of lives of kindness, unselfishness. He had practiced it in his past life before he became Bodhisattva in his last life. So it is not that instantly something occurs to us. It gets accumulated, it appears, reappears, gradually it gets elevated, and then one fine life, it reveals to the optimum level of spirituality. So these illustrations which we learn about Gautama Buddha in the Jataka stories, or many people whose are previous words people study and understand, these all illustrate an important principle, that there is this spiritual development. It is a very natural thing. It is the law of evolution, be it slow or fast, but people will be developed. People will be spiritually growing up. That is why the expansion of consciousness flows very naturally only when we are self-disciplined, we master self-control, we get to see it. Enlightenment and this liberation from all illusions and sufferings of the lower life will occur to everyone. Definitely. It is the truth. Everyone will pass through all their karmic effects of whatever was caused. So there is this very good saying, somebody had, kind of initiated, and I kind of picked it up, that if you are not getting something, you think that I must have this peace of mind, or I must have this, self-control or a balance in life, or in general, people say, I do not have a work-life balance. I'm just working and I'm suffering. I don't have a balance in my life. So we all are advised that if you do not have it, please go and cause it. Don't kind of
unnecessarily or repeatedly complain that I don't have it, I don't have peace in my life, everything is so sorrowful around me, I'm getting into a very disturbed life, and I don't have happiness, there is everything is missing, all good factors are missing in my life, because probably we could not cause it. That is why the effects we are facing now. So it's very simple. If I don't have, I have to cause it. This is the truth of karma and reincarnation. Because we have not caused, it's not occurring. Something we had caused, it's occurring. Very simple. So when we understand the causal body and the operation of the causal body, or the interpretation of causal body, or the consciousness happening at the causal plane, we will realize. So it's better we understand the operation of the bodies, the structures, and how we are operating, how the higher self and the consciousness, super consciousness, is operating through these bodies. And then also when we talk about the highest form of it, like Atma Buddhi Manas, and we talk about the very triple nature of Atma is Sat Chidanand, like Sat, Chit, and Ananda. These are aspects of divinity. It is at the very highest level. And that is why we call it self-illumination, self-sufficiency, and self-determination. While self-illumination and self-sufficiency are exercised chiefly through the two lower vehicles of the individuality, like our causal and Buddhic vehicles, self-determination is it has its source in the Atma itself. Because it's there, it will only reveal. So it finds expression in our in the personality and the spiritual willpower. That is why until our will has become strong, that's what we were talking about when we are discussing about desire. So desire, all lower desires will lead us to a certain level, and if we do not work on our higher willpower until we are becoming stronger in that aspect, we would probably not be guided by the supreme will or the Atmic will, I must say, and we will always be under the control of the whims and desires by the personality. That is why we must expand if we really want to achieve this enlightenment. And then there is the saying of each man is to himself absolutely the way, the truth, and life. So nowhere we are going to find it outside somewhere, and somebody is coming to lead my life, expand my consciousness. It's not. It has no formula that I'll go and sit in a machine and automatically my consciousness will be evolved or my consciousness will be expanded. No, it's not like that. We have to start working at a very surface level of it, and then gradually we will get to understand how are we evolving. That is why let us focus on the 7 bodies, the 7 planes, how the consciousness is operating, how am I behaving in my daily life, how am I treating, how am I responding to my all bodies, my physical body level, like the kind of basic things I'm doing with my physical body, then my astral thing, my feelings and all my emotions, then my thoughts. All this purity will start from the lower level to the higher level if you really want to expand it. And at least if we start at that desire and will level, no, like from the lower desire to the higher will, if we start expanding on that as well, we will automatically get into a stage where we will experience the expansion of consciousness from the I-ness to the universal, from the petty selfishness to the selfless action and words and vibes and thoughts and feelings for everybody around. And I wanted to end with the mantra Gayatri, which definitely talks about the consciousness at all levels. Om Bhuhu, Om Bhuvaha, Om Swaha, Om Maha, Om Janaha, Om Tapaha, Om Satyam, Om Tat Savitur Varenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yona Prachodayat. So when we realize this, so if we could just, kind of take a pause and practically do this, when I'm saying Om Bhu, I'm actually meditating on the physical plane, consciousness of the physical plane. So not just today or not just in this session now, every time when I'm uttering this, when I'm saying Om Bhu,
I'm operating, I'm meditating on the physical plane. Then Om Bhuvaha, the intermediate space, consciousness of the prana. Om Swarloka, Swaha, heaven, consciousness of the beginning of the divine mind. Maha, the great, the mighty, another subtler plane, the all-pervading consciousness. Janaha, still subtle plane, all creating consciousness. Tapaloka, when I'm saying Om Tapaha, with all the divine tejas, illumination of Shakti. Then Om Satya, the truth, consciousness of Brahman. And when I'm saying the divine illumination, which is most adorable and which is of the nature of divine Bhargo Devasya, I meditate. May that divine intelligence awaken our spiritual consciousness. So that divine consciousness, which is all-pervading, divine, essence, immortal, blissful, all this Brahman, when we concentrate on that, we are actually expanding from Bhu Yes. to Swan, to the level. So let us practice it at our lower level and expand it whenever we are doing things. Thank you. Thank you, Swarlina. Smita ji, please go ahead with your ODIA version. Thank you. सेकेंड पार्ट रे से शुभ्रलीना स्टार्ट करथिले से कहिथिले जे जणे व्यक्ति ता जीवन रो व्यक्तिगत उपादान गुडी कर पर्सनल एलिमेंट को त्याग करी निजर कार्य को प्योर और शुद्ध शुद्ध करबा शुद्ध करे दिनों को दिन इम्पर्सनल हुए माने से निज पाई न भावी अन्य पाई भाबे ताहाले से डिवाइन विल बे दिव्य इच्छा शक्ति सहित दिव्य इच्छा सहित से जॉइंट हुए तार प्रतिफलित हुए से शक्तिटा तार चिंताधाराटा प्रतिफलित हुए आमे एठी आगुरु आमे कथा ही सारिचे इच्छा शक्ति एस्ट्रल बॉडी भौतिक शरीर एबे आमे कथा हबा अबाउट द मानसिक मेंटल बॉडी हायर मेंटल बॉडी हमर चिंताधारार वाहन मानसिक शरीर विषय कहबाकू गले आमे सर्वप्रथमे यह बुझिबा आवश्यक जे किछि मात्रा रे वस्तुनिष्ठ करिवार क्षमता हासिल करिवा पई मनर गतिविधि उपरे ध्यान देवा आवश्यक अधिकांश लोक जो माने एकाग्रता एवं ध्यान अभ्यास करिवा आरंभ करंती से माने जानती नहीं जे सेमानकर मानसिक व्यायाम स्वल्प अवधि रे सेमानक द्वारा सॉरी तांकु भल फलाफल से माने पाई परिबेनी कारण आमे जेमती से वर्णना कले कि आमे जदि के मेडिटेशन करिबा कि ध्यान करिबा आमे चाहिबा जे हम मनर शक्ति को आमे निज भितर कंट्रोल करू एटा एते इजी रे हेई परिबनी कारण आमे जदि दिन जाक आम मनर चिंताधारा इयाडे साइड बुलुची किछि खराब किछि भल आ माने तार कंट्रोल नै आम निज मन कंट्रोल करि पारने हठात रागी जाउचे हठात हसुचे कि हठात तापर विरक्त हो जाउचे आमे सेथिरे भी निज मन को आमे कंट्रोल करि पारुने तबे आमे जतले ध्यान करिवा पई बसिबा सेतरा आम मन को एते सहज रे आम कंट्रोल करि परिबानी निज अधीन रे करि परिबानी तेणु प्रथमे मेडिटेशन करिवा पूर्वरु या जैसे हमर मेंटल बॉडी रो प्रोग्रेस करिया पूर्वरु हमकु प्रथमे निजर मन निज माइंड ऊपर हमकु हमर धारणा रखिया दरकार हम जानिबा दरकार आम मनर गति को आमे बुझिबा दरकार कि आम मनर गति कोठी केतेबेले केमती रोज आमे जेतेबेले सेईटा कंट्रोल करि नबा ताहाले हमकु ध्यान करिबारे ध्यान बसिबारे कि ध्यानर जो फल हमकु मिलिबारे किछि देरी हबनी तेणु प्रथम कथा हैला कि आमे ध्यान करिबा पूर्वरु निजर माइंड को आमे प्रस्तुति करिबा ध्यान पाइका we can safeguard our mental health by making ourselves pure and positive towards the evil केमति करिबा ना आमे हमर जो भल चिंताधाराटा सेटा को आमे एक्सपैंड करिबा कि हमर जो हमर खराब चिंताधारा ताको आमे कंट्रोल करिबा ताहाले तापरे आमे जदि ध्यान रे जिबा कि ध्यान करिबा मेडिटेट करिबा ताहाले हमर सेटा को हेल्प करिवो हमको ध्यान रे बसिबा कि ध्यान रो फल मिलियो भी हमको हेल्प करिवो देन आमे एबे कारण शरीर ऊपर कथा होबा
वर्तमान कारण सारू ग्रहण करवा जहाँ आत्मा बुद्धि मानस मध्य कार्य करुथिबा इमोर्टाल इगो राइट ताहार आउटर मोस्ट व्हीकल गठन करे जहाँ कहते बाह्यतम वाहन आउटर मोस्ट व्हीकल गठन करे। यह हूँ समस्त अनुभूतिर भंडार जहाँ माध्यम इगो क्रमागत अवतार रे अतिक्रम करे एवं तांका विवर्तन समय रे इवोल्यूशन तांका विवर्तन समय रे धीरे विकसित करती जेपरी अनुभव एवं संवेदनशीलता सूक्ष्म शरीर कंपन कारण नाम एवं रूप सहित दृढ़ चिंता निम्न मानसिक मानसिक शरीर कंपन कारण होइथाय। सेहीपरि कारण शरीर उपरे उत्पन्न कंपन कारण एब्स्ट्रैक्ट थॉट मध्य होइथाय। पूर्व समय रे एटा पूरा टोटली कहिछि जे आमे जहाँ हमर प्रीवियस लाइफ रे प्रीवियस इनकार्नेशन रे जहाँ आमे करिचे भलो कि खराब जहाँ भी आमे कर्म करिचे तामे निजे करिचे व्यक्तिगत भावे करिचे तेणु एगुड़िक कारण शरीर रे छाप किंबा बीज भाव रे रही थाए। तेणु जेतेला आमे परे जेतेला आमे आउ गोटे इनकार्नेशन रे जाऊ आउ गोटे जन्म नो तेणु ता उपरे सेटा डिपेंड करे आमे जहाँ कर्म करिचे ता उपरे एटा डिपेंड करे कि आमे जो नेक्स्ट इनकार्नेशन रे हमर कोन रहिबो लाइफ टा केमिति रहिबो। एठी एक माने जो आम जातक कहानी रू आमे सुनिचे बुद्धदेव का विषय रे बोधिसत्व हेबा पूर्वरु भगवान बुद्ध किपरि निस्वार्थपरता और दयार जीवन यापन करी निजर आध्यात्मिक प्राकृतिक सिद्धि करथिले। से जो आमे कहले माने बुद्ध एते जल्दी माने तांको मिली जाइथिला सिद्धि मिली जाइथिला किंतु ता पूर्वरु से तांकर जीवन रे केमिति तो निजको गोटे परे गोटे निजर कंट्रोल करथिले तांकर जतक माने आमे जो कथा हितले जे निज विषय रे छाडी दबा निज विषय रे चिंता न करी कि मानव समाज या पृथ्वी विषय रे चिंता करिवा से सब से जीवन यापन करिवा परे तांको ए बोधिसत्व मिलिथिला। एगुड़िक एक गुरुत्वपूर्ण सिद्धांत दर्शाए जे प्रकृतिर समस्त जिनस परी आध्यात्मिक विकास हेउची विवर्तन एवं मंथर अभिवृत्तिर विषय जो माने आत्मशृंखलतार मूल्य देवाक प्रस्तुत नुहंती से माने एहार फल एवं निम्न जीवनर भ्रम एवं जंत्रणा ठारू मुक्ति पाइबा आशा करि परिबे नाही। जदि आमे आमे निजको निजर माने चिंताधारा को आमे एडवांस न करिबा सेही परि निम्न दर चिंता रहिबा ताहले हमर जो सोल डेवलपमेंट ता एते शीघ्र हबनी। ईश्वरीय दुस्साहसिक कार्य आरंभ करिबा प्रथम आवश्यकता होची मूलदुआ पकेइबा। एहार अर्थ हेउची एक उच्च शरीर माने श्रेणीर शक्ति आध्यात्मिक शक्ति और निस्वार्थपरता और निजको शुद्धता आनिबा। तापरे होची आमे कथा होची एठी सचित आनंदर सहित जेमती आत्मा आत्मार मध्य तीन गुण रहिची गोटे हैला आत्म आलोकीकरण सेल्फ इल्युमिनेशन आत्मनिर्भरशीलता सेल्फ सफिशिएंसी एंड आत्म निर्णय सेल्फ डिटर्मिनेशन ये तीनोटी आत्मार गुण रहिची। आत्म आलोकीकरण एवं निर्भरशीलता मुख्यतः व्यक्तित्वर दुईटी निम्न वाहक लाइक कारण और बुद्धिक वाहक माध्यम प्रयोग करा जाउथा बळे दीटा ए दीटा करे मतलब जो निम्न कारण और बुद्धिक वाहक ए दीटा रे आत्मा आलोकीकरण आत्मनिर्भरशीलता कार्य करे किंतु आत्म निर्णयर उत्साह आत्मा सहित रही आत्मा सहित लिंक करिछि। डिविनिटी या देवत्व रे सत चित आनंद परी आत्मार मध्य एमिति तीन गुण रहिछि। इच्छा शक्ति अभिव्यक्ति ए जो इच्छा शक्ति जो कहली तीन प्रकार रही है एंड इच्छा शक्ति अभिव्यक्ति एपरी होता है जेपर्यंत आमर इच्छा शक्ति दृढ़ होइनी जार अर्थ होची जे आमर जीवन आत्मा इच्छा द्वारा परिचालित हुए जेपर्यंत आम निज मन को निजे कंट्रोल करिने निज माने मनटा को मेंटल बॉडी को थॉट को इच्छा को निज कंट्रोल न करिचे एवं व्यक्ति तो इच्छा और इच्छा द्वारा नुहे लक्ष्य हासिल करने कष्टकर से पर्यंत
आमे हमर जो लक्ष्य अछि हमर आत्मार डेवलपमेंट या ज्ञान पाइबार जो लक्ष्य अछि ताकू पाइबा बहुत कष्टकर हब जे पर्यंत आमे निज को कंट्रोल करिने निजर इच्छा शक्ति निज माइंड को हम कंट्रोल न करिचे। आमे चेतना सहित निजको जेते अधिक चिन्हट करू सेते अधिक आमे भौतिक ब्रह्मांड एवं एहार भ्रमरु मुक्त हेउ एवं वास्तवता विषय रे सचेतन हो। आमे निजर हमर जो चेतना शक्ति जेबे हमर एक्सपैंडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस रे जो हमको कहा जाय छी जे हम जे पर्यंत हम चेतना शक्ति को एमती वर्धित करिबा बुझिबा चेतना शक्ति को बुझिबा ताहले आमे भौतिक शरीर रु भौतिक ब्रह्मांड रु आमे धीरे धीरे आगो को अग्रसर हवा और हमर निजर डेवलपमेंट हवा। Yes, Kaustubh, you can go ahead with the Marathi also. Thank you. Sir, unmute कर लीजिए, unmute. I've got the thing translated in Hindi as well right now. Okay, तो go आपको ahead. हिंदी में चाहिए? Go ahead. हिंदी में जाए, ठीक है। व्यक्ति के जीवन से व्यक्तिगत तत्वों का धीरे धीरे उन्मूलन उसके कार्यों को और अधिक शुद्ध बनाता है। व्यक्तिगत इच्छाओं के क्रमिक उन्मूलन के साथ इच्छा धीरे धीरे प्रभुत्व प्राप्त करती है और कार्य के प्रेरक शक्ति बन जाती है। और जैसे जैसे कार्य इस प्रकार शुद्ध हो जाता है वह अधिक से अधिक अवैयक्तिक और ईश्वरीय इच्छा का प्रतिबिंब बन जाता है। अब बात करते हैं मानसिक शरीर की, जो हमारे विचारों का वाहन है। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि मन की गतिविधियों को देखने पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है ताकि कुछ हद तक उसे वस्तुगत बनाने की क्षमता हासिल की जा सकती है। अधिकांश लोग जो एकाग्रता और ध्यान का अभ्यास करना शुरू करते हैं वे नहीं जानते कि उनकी मानसिक अभ्यास की छोटी अवधि के दौरान उन्हें जो परिणाम प्राप्त होते हैं वह बहुत हद तक इस बात पर निर्भर रहते हैं कि वे दिन के बाकी समय में मन को कैसे नियंत्रित और उपयोगी बनाते हैं। जो व्यक्ति अपने सामान्य दैनिक कार्य के दौरान अपने मन को भटकने देता है वह अपने ध्यान की अवधि के दौरान उसे एकाग्र करने में कभी भी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि दिन भर मन भटकने की प्रवृत्ति पैदा होती है और इस प्रवृत्ति पर एक बार में काबू नहीं किया जा सकता। मन आदतों का प्राणी है और एक बार आदत बन जाने के बाद एकाग्र होना आसान है। विचार बाहर से आए या स्वयं प्रेरित हो, मानसिक शरीर को उनके संबंध में निरंतर विवेक का प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और उसे किसी भी ऐसे विचार पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जो अवांछनीय प्रकृति का हो। इसलिए अगर हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो यह बहुत जरूरी है कि हम सभी तरह के बुरे विचारों के प्रति सकारात्मक होना सीखें। हमारे मन में आने वाले बुरे विचार से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है हम अपने मन को तुरंत किसी दूसरे विचार की ओर मोड़ दें जो उच्च और नेक प्रकृति का हो। मन एक समय में सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोच सकता है और किसी दूसरी चीज पर ध्यान देने से ही पहला विचार स्वाभाविक रूप से खत्म हो जाता है। हमें किसी भी हालत में उस विचार पर ध्यान देकर उससे लड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे उस विचार को और ताकत मिलती है और उसका निष्कासन ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर कोई जलती हुई माचिस गलती से किसी ज्वलनशील पदार्थ पर गिर जाए तो आग को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है
उसे तुरंत बुझा दिया जाए। अगर हम पदार्थ को आग पकड़ने का समय देते हैं तो उसे बुझाना और भी मुश्किल हो जाता है। हम हमेशा अपने लिए माहौल नहीं चुन सकते या उस पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं रख सकते। हम खुद को बुराई के प्रति शुद्ध और सकारात्मक बनाकर अपने मानसिक स्वार्थ की रक्षा कर सकते हैं। अब हम कारण शरीर को लेंगे, जो आत्म, बुद्धि, मानस के माध्यम से कार्य करने वाले अमर अहंकार का सबसे बड़ा बाहरी वाहन है। यह उन सभी अनुभवों का भंडार है जिनसे अहंकार क्रमिक अवतारों से गुजरता है, और वे क्षमताएं हैं जो अपने विकास के दौरान धीरे धीरे विकसित करता है। जिस प्रकार भावनाएं और संवेदनाएं और सूक्ष्म शरीर के कंपन के कारण नाम और रूप वाले ठोस विचार निचले मानसिक शरीर के कंपन के कारण होते हैं, उसी प्रकार अमूर्त विचार भी कारण शरीर पर उत्पन्न कंपन के कारण होते हैं। पिछले जन्मों के दौरान अच्छे और बुरे कर्मों का व्यक्तिगत लेखा जोखा यहाँ पे रहता है, और ये कारण शरीर में छाप या बीज के रूप में रहते हैं और धीरे धीरे फलित होते हैं और भविष्य के जीवन की परिस्थितियों का निर्धारण करते हैं। हम जातक कथाओं में पढ़ते हैं कि कैसे भगवान बुद्ध ने बोधिसत्व बनने से पहले निस्वार्थता और दयालुता के कई जीवन जीकर अपने आध्यात्मिक स्वभाव को परिपूर्ण किया। ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को दर्शाते हैं कि आध्यात्मिक विकास प्रकृति में सभी चीजों की तरह क्रमिक विकास और धीमी वृद्धि का विषय है, और जो लोग धैर्यपूर्वक आत्म अनुशासन की कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं हैं, वे निम्न जीवन के भ्रम और पीड़ा से मुक्ति और ज्ञान के फल प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकते। दिव्य साहसिक कार्य शुरू करने के लिए पहली आवश्यकता नींव रखना है, और इसका मतलब है उच्च स्तर की शक्ति, निस्वार्थता और पवित्रता विकसित करना। आत्मा अपनी प्रकृति में त्रिगुणात्मक है, जो दिव्यता के सत चित आनंद पहलुओं के अनुरूप है, तथा इसमें आत्म प्रकाश, आत्म पर्याप्तता और आत्म निर्णय के तीनों गुण हैं। जबकि आत्म प्रकाश और आत्म पर्याप्तता मुख्य रूप से व्यक्तित्व के दो निचले वाहनों अर्थात कारण और बुद्धि वाहनों के माध्यम से प्रयोग की जाती है। आत्मनिर्णय का स्रोत आत्मा में ही है। यह व्यक्तित्व और आध्यात्मिक इच्छा शक्ति से अभिव्यक्त होता है। जब तक हमारी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं हो जाती, उसका अर्थ है हमारा जीवन आत्मा की इच्छा से संचालित होता है, न कि व्यक्तित्व की सनक और इच्छाओं से। तब तक आत्मदान के लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल है। कहा जाता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में पूर्णतः मार्ग, सत्य और जीवन है। पदार्थ में अंतर्वेशन पदार्थ के साथ पहचान द्वारा लाया जाता है। पदार्थ से बाहर विकास चेतना के साथ पहचान द्वारा लाया जाता है। जितना हम पदार्थ के साथ खुद को पहचानते हैं या एक मानते हैं, उतना हम पदार्थ में डूब जाते हैं और अपने वाहनों में और पर्यावरण के गुलाम बन जाते हैं। जितना हम अधिक चेतना के साथ खुद को पहचानते हैं, उतना ही हम भौतिक यानी ब्रह्मांड यानी जड़ जगत और उसके भ्रम से मुक्त हो जाते हैं और वास्तविकता के प्रति जागरूक हो जाते हैं। अंत में जो ओम भूर्भुवः स्वः कहा, वो तो उन्होंने कह ही दिया है। उसका भाषांतर भी मैं बोल सकता हूँ, लेकिन शायद उसकी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बढ़िया रहा। और मैं कहा कौस्तुभ भाई आप त्वरित कुछ न कुछ सॉल्यूशन देते हैं, तो आज भी आपने हिंदी में कह दिया।
बहुत बहुत धन्यवाद। ओपन है सुलना जी, स्मिता जी, कौस्तुभ जी, इस विषय में कुछ और रह गया और कहना चाहते हो तो आप कह सकते हैं इस वक्त, या फिर हम मुखातिब होंगे जितने भी लोग उपस्थित हैं उन। जी सुलना जी, कुछ कहना है और? कि मुझे कुछ कहना नहीं है। मुझे लगता है हम अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस करें और राइट। एक्सपेंशन की एज अ ड्यूटी मान के अपने कॉन्शियसनेस के एक्सपेंशन के लिए काम करें। जी जी। ओके। ओके। स्मिता जी या कौस्तुभ जी कुछ कहना चाहते हैं? जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमारे स्पीकर ने बहुत ब्यूटीफुल बट डिफिकल्ट टॉपिक आज चुना है। जो चेतना, ये बहुत डिफिकल्ट है और मैं बस हर बार मैं इसको समझने के लिए कोशिश करती हूँ, बस पता नहीं कहाँ तक समझती हूँ। तो चेतना इट्स ए भास्ट टॉपिक, एक्चुअली बहुत बड़ा चीज है। जी जो जी। हमारा ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन माइंड का बहुत बड़ा चीज है। उसको हमें धीरे धीरे समझकर धीरे धीरे आगे जाना पड़ेगा एक्चुअली। क्योंकि ये बोलना बहुत आसान है कि हम माइंड को कंट्रोल कर लेंगे, इधर उधर नहीं जाएगा माइंड, बट इट विल गो इन द प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस भी इतना सहज में नहीं हो पाएगा, इट विल टेक टाइम। तो यस। तब तक हमें पेशेंस रखना है और धीरे धीरे आगे जाना है। थैंक यू सो मच। यस कौस्तुभ जी। इस दिशा में जैसे कहा गया कि प्रैक्टिस ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि दैट इज़ व्हाट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। Even in Pune Lodge, we have now started a discussion at 9 o'clock in the morning on Saturday, where we don't quote different texts. We हम्म। talk about what you think about it, what is your say about each particular aspect. We have just covered two sessions up till now, and we feel that a lot of people are opening up gradually or about talking about their own thoughts rather than quoting somebody's thoughts. And we will gradually go into this particular aspect of practice. So, just like she said, practice is most important. Yes, I fully agree on that. And this was a difficult topic and it was combined very well. Different aspects of it were combined together. Thank you. बहुत ही बढ़िया, एकदम उसको संक्षिप्त में लेकिन वाकई में इस तरह से आपने लिखा है सुलना जी जो आसानी से समझ में आएगा। जी प्रदीप जी कुछ कहना चाहते हैं? Unmute. I thought I'll speak after all the seniors. Okay. So you can do that. Jidin Sampat Yeah, ji, I would like to listen to others first. go ahead, sir. Jiten ji. Yeah, can you hear me, right? Yeah, yeah, can hear you loud and clear. What I'm going to tell from my study, research, discernment, experience, and deep understanding. What has been said so far, I find it to be that I've studied from my study. I differ from what has been said today by all three of them. Okay. In the sense that we have taken 5 koshas, then they are showing 7 koshas on the announcement. But I would like to, I don't want you to accept anything that I'm going to tell you. But at the same time, I don't want you to reject it, please. Yeah, yeah, Do there are not accept it and do not reject it. I would like you to chew my words and digest it and then accept or reject it, okay? When the solar system was formed, consciousness was already expanded. We are not expanding. Consciousness is already expanded. But it's been covered by veils and veils and veils and veils. So what we have to do is to unveil them. At the moment, when we reach the human level, uh, the figure is what maybe thousand times bigger than the figure I'm going to give you when the amoeba was formed.
which is the physical, first physical thing was amoeba. And it has got whales which are 562 trillion, 949 billion, 953 million, 421,312 whales. This is a figure when we multiply the so-called that power, energy, the essence, the source. He multiplied himself into many. So he started with 2, like the cells. Cells of one cell is always now dividing 2. This two will divide into 4. So I will just come to short. I just want to say about the koshas. So the unveiling of this, we have to do it. So when you mention 5 koshas, then when you say physical body, then the pran body, and then you go into astral body, and the mental body and calm body, like that 5. Then there will be another 4. It will be 9 koshas. So the actually 7 koshas should be Atma 1, Buddhi, Manas, causal body, which is Antakarana bridge. And then lower mental body, astral body, and physical body. These are the 7. The physical body has got 3 sub planes, which is physical, pran, and double etheric. We know that about double etheric. So those 3, including the 1 physical plane. Okay. Okay, that's what I want to tell you now. That this title is also slightly wrong, and Sir, nothing is wrong. and as well as the koshas. Jitenji, you are very knowledgeable, but I differ to you in one way, that is, there is nothing wrong. Whatever speaker wishes to find out in a particular way, he or she writes in that way. That's what Theosophy is about, that we have to probe. So thanks for your view also. Excuse me, I concur with the third speaker. Okay. He says, this is what he said, that we should research ourselves and come out with our understanding. That was Sulnaji. I agree totally with the third person. No, sir, Jitenji, it is Sulnaji's study which we are studying today. And then you also ended with a wonderful study with yourself. I'll go ahead with Harshodanji. Would you please unmute yourself and say something? कंचन जी, उसके बाद आप कहना चाहती हो, फिर प्रदीप जी. SUVRALINA ji, I must congratulate you on this particular topic. The most wonderful, penetrating, and studious. A student of Theosophy must know all these things. It is a state of consciousness. It is a state of mental level. And of course, there is the evaluation. With evaluation, there is also a kind of study that we have to carry out as a Theosophist. Because certain things regarding the mind, that is also very important to know. And categorically, what you have imparted in this particular explanation, that is very important. Because see, sometimes certain things that we have to understand, that comes from our meditation. Certain thing is regarding the referential knowledge. And certain things that are there, it is informative. So informative part is always there. It is understood very easily. But what about the intuitional part? This is what you have touched, that intuitional part regarding the consciousness. And our mental status should be in the particular understanding what we think every day, what we carry out every day, what we have as a person, we live the life. So in that way, this is the real teaching. And really, I congratulate you, because I don't want to have more expansion because of the time limit. And therefore, really, I congratulate you. And KAUSTUBH, I heard you in both the languages. Marathi and really, and for this ODIA translation, it is, what's the name? I forgot, sorry. For ODIA, who translated? SMITA. SMITA. Yes.
Saral ji, yeah, Smita. Sorry, yes, Smita ji. Yes, I congratulate you because it is as good as the Gujarati language. I can understand ODIA very easily. Just I can kill that. So it is really a kind of Triveni. That is the language to be understood in Triveni also. That is the part of our understanding. And really, this content is very strong. Understand it vary from our own aspects and our own point of view. Thank you very much. Thank you. थैंक यू हर्षवर्धन जी। क्विकली कंचन जी, आप कुछ कहना चाहती हो तो कहिए। थैंक यू ऑल द स्पीकर्स। सुवरलीना ने जो कुछ कहा, पूरी मेडिसिन को दोनों ने कैप्सूल में भर के डाल दिया है। बहुत बहुत अच्छा था। लेकिन इस पूरे एपिसोड के साथ साथ एक पॉइंट जो मेरे माइंड में आया वो था कि इस सब से हमारी थॉट भी कनेक्टेड है और थॉट से ये सब कनेक्टेड है, क्योंकि जो कुछ हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बैड गुड व्हाटएवर, वो हमारी थॉट्स के साथ भी जाता है। तो इसके लिए दैट बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। It's not separated from our personality in any manner, because we are most affected by those thoughts, what we experience in our physical body, astral body, because all emotions. I must have experienced something somewhere, sometime, but it remains here. So, to come out of it, or to go above it, over it, or to nullify it, because as she correctly said, वही सोचे जाओगे तो कुछ नहीं होगा। उसी समय you switch. Correct. You are not only switching the emotion, you are switching your thought as well. This is what just after listening to all the three speakers came to my mind. Thank you very much. It was lovely. और congratulations to तरल जी, त्रिवेणी में आपने इतना अच्छा बना दिया कि एटलीस्ट मैं ये तो जरूर अटेंड कर पाती हूँ। अरे सो नाइस ऑफ यू कंचन जी, धन्यवाद। आप ही लोग तो इधर मजा आता। चंद्र शिंदे जी, आपके फाइनल वर्ड्स कुछ? अभी ओके, एम आई ऑडिबल? यस सर। यस, ओके। आकाश में बहुत सुंदर भी दिख रहे हैं। ओह, I must congratulate Suvarlina. Very nicely explained. Very, very spontaneously, whatever you have studied, whatever you have understood, and explained very nicely in fluent English. I must congratulate you, Suvarlina. Very nice presentation. And KAUSTUBH, I know, he knows both Hindi and Marathi. And he tried to put it very nicely also. And Choudhury ji, she told in ODIA, no? Yeah. She is also very nice. All the three speakers contributed very nicely. The topic itself is very nice, because every human being is a septenary being. And how he is constituted is explained by Suvarlina very particularly and very nicely. That is what theosophical teaching is. We must also understand what Jitendra Sampath told, that no question of expansion of consciousness, but it is the unveiling of the consciousness. The wheels after wheels, they vanish, and there is like that unveiling, unveiled spiritual perception, we say. We go on perceiving more and more as we treat the spiritual path. So what we have to understand is there are three souls. HPB speaks about the souls, and when she says spiritual soul is at Buddhic level, human soul is at mental level, and animal soul is at desire level. So these are the three souls, and Stula Sharira, Linga Sharira, and Pranamayakosha is giving vitality to this. So once we understand this, then what is this expansion of consciousness? What is this, the unveiling of consciousness, or unfolding of consciousness, like the flower unfolds? This, I have something to put here in Hindi, which it appealed to me.
It is the emotional level which expands. It starts from the, because our astral body is directly connected to the spiritual soul, Buddhic body. And when that bhava comes, when we do dharma, when we do all these things, so it is said in Hindi, just I want to put before you, धन का देना तभी सार्थक होता है जब धर्म साथ होता है। वाह। धर्म का देना तभी सार्थक होता है जब धर्म साथ होता है। क्या बात। और सुंदरता का होना तभी सार्थक होता है जब चरित्र शुद्ध होता है। क्या बात। और बुद्धि, व्हाट वी आर गोइंग बुद्धिक टॉक्स एटसेट्रा, वो तभी सार्थक होता है जब विवेक साथ होता है। So whatever we are telling, are we telling really what we have understood, or whether just repeating what the others have said? That kind of विवेक साथ होता है। और संपत्ति का होना तभी साथ होता है जब स्वार्थ साथ होता है, निस्वार्थ होता है। वो परिवार तभी सार्थक होता है जब प्रेम भरे होता है। और भारी, इट इज आवर जर्नी, तीर्थ यात्रा, तीर्थ तभी सार्थक होता है जो भाव शुद्ध होता है। सो दिस भाव, आई एम कनेक्टिंग दिस विद द एस्ट्रल बॉडी, desire body, and more concerned with the, we must become desirelessness, our heart must become motiveless, pure, then only that kind of emotional force can take us to the Atmic level, because that is what expansion or unveiling, I think. Very nicely, I enjoyed your talk. And I must congratulate all the three talks also. Saralji, you are conducting very nicely. Thank you very much. Thank you so much, sir. And now over to Pitama Krishna ji. Am I audible? Sir, I'm not seen anywhere. My profile is not seen anywhere. Am I audible? Yes, seeing your face. You also. Yeah. While thanking and congratulating SUVRALINA for what she has conveyed to us, I would urge very earnestly all the sincere, serious students to study the book written by Dr. Annie Besant, The Study in Consciousness, where she has depended on Madam Blavatsky in many ways. And of course, one could study, assimilate the essence, and then participate in groups like what Mr. KAUSTUBH was saying. I don't think ideas simply come when we sit there and immediately we can. We have to depend definitely on something which is already said, or we have read, or we have understood. The essence of what we understand, if it comes through in our expression in a meeting which takes place on Saturdays, as Mr. KAUSTUBH was saying, it will be wonderful. And the consciousness she talks about, she says universal consciousness is capital S. Individual consciousness is small s. So we need to be very careful. And there is another consciousness. You have the individual removed from the universal consciousness. There is a whole lot of other consciousness. She talks about three. So one has to be very attentive while going through that book, Study in Consciousness. She says at one particular point of time, life and consciousness are two sides of the coin. So when life expands, consciousness expands. When you drop your grosser bodies and go upwards, maybe you will touch upon the consciousness, and that consciousness becomes part of the universal consciousness. And that's the whole journey, the obligatory journey Madam Blavatsky talks about. Each soul has to undertake a journey which is obligatory journey, and she says that is possible only when the highest principle in us moves and gets going towards the universal consciousness. Thank you for giving me an opportunity.
Thank you, sir. It's our opportunity to listen to you, sir. Thank you so much. Yes, Pradeep ji, go ahead. Final words. Yeah, thank you so much. I was waiting for comments from Shindeji and Krishnaji so that, because I have no questions. I joined very late. I'm so sorry, Surulinaji, but I will definitely see the video in YouTube. So far I just want to add a few things. We came up with the title, which is Expansion of Consciousness. Jitendra ji came up with a word, unveiling of consciousness. Shindeji gave us a word, unfolding of consciousness. And there is one more which Madam Besant has used in the book mentioned by Krishnaji, N.C. Krishnaji, that is awakening of consciousness. Yeah, so now we have these words, but what I feel is sometimes in spirituality, we fall short of words to explain something. So we keep on jumbling with these words. But the main goal of what they are trying to say is the same. So even when consciousness awakens or the consciousness is unveiled at a different level, it is nothing but the end result is expansion, because we will not lose the consciousness which we are already having at a particular level. Like, for example, a common man, his consciousness at the physical body, a little bit of consciousness at the mental body, lower mental body, and he practices yoga, meditation, and slowly his consciousness is being unveiled or awakened or unfolded at the higher manas or buddhi. And at hatha yoga, at the end, he become a yogi and his consciousness is unveiled or awakened at atmic level. But he will not lose the physical one, but he still has, so that his consciousness has expanded. So the words may, individual words may have a different meaning, but if we put together everything, I think the effect, the final goal is the same thing. That's what I want to add. The second thing is, Jitendra ji mentioned a very good point. Even as a student, I felt this many times. Some people classify fivefold, some people classify sevenfold. There are various kinds of classifications. In Bhagavad Gita, Krishna, or Lord Krishna, mentions only threefold. I am the body, I am the manas, and I am the Atma. That's what he says, right? So if we start from Bhagavad Gita, the threefold, body, mind, and soul, and then it is further refined in Vedas as Panchakoshas, Annamaya, Pranamaya, Manomaya, Vignanamaya, Anandamaya, right? So what we should understand is Madam Besant, who read and understood this Eastern philosophy, the Indian philosophy, tried to explain to the Westerners, took this Indian philosophy and tried to explain to the entire world. So maybe they further refined it into sevenfold, so that for better understanding. So therefore, these classifications are not something different or something against each other, but probably a new way of refinement, new way of trying to explain things. That's how I see them. So instead of getting confused in these words and classifications, thank you so much for all the three speakers. I will definitely see the video. Thank you so much. Thank you so much. And one word, no, one sentence. I would like to add. Yeah. The words which you are using was only in this world, the physical world. There are no words elsewhere, no language elsewhere. But we are identifying with words, maybe objects we see and identify, but that's only in this world. Beyond this world, there are no words, no sights. It's only the Mano Chakshu who can see. Thank you. Thank you, sir. And thank you, Sampath ji. Thank you, Ashwadan ji. Thank you, Chandrakant Shinde ji. Thank you, Krishna ji. Thank you, everyone, for putting those final words after the entire speech, entire meeting. It's really wonderful. We learned so many things. Yes, Prita, कुछ 2 मिनट कहना चाहते हो तो कहकर हम समापन की ओर जाते हैं. हाँ, संपत जी, आ रहा हूँ. Many thanks. Yes, many thanks to all the three speakers. And KOSHAS initially spoke on in Marathi and immediately shifted to Hindi. I surprised actually, and very nicely done. And then here so many knowledgeable brothers and sisters are there, and I'm very thankful. And
by attending Taralji's this session, so my day by day self confidence is increasing, and for that, thank you, Taralji. And थैंक्स टू यू, कीप कमिंग प्रीतम जी, एंड डोंट फॉरगेट दैट इन्होंने एक बहुत अहम कार्य लिया है मेरे इस जो त्रिवेणी मीटिंग हम लोग करते हैं उसमें। ये 31 को हम लोग अडियार में हैं और इन्होंने ये बीड़ा उठाया कि अडियार से मैं बोलूंगा एज अ स्पीकर। लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। थैंक यू सो मच, एंड आई थिंक एवरीवन इज कवर्ड, सो वी विल Just want to say some. सॉरी संपत जी, प्लीज गो अहेड। According to the Judaism, there are 10 koshas. In Kabbalah, if you read the Kabbalah, because we are supposed to study Kabbalah with Quran, the Gita, and all other things. So I have studied about Kabbalah. And they mentioned 10. ओके सर, थैंक यू सो मच। बस यही एक मजा आता है कि ज्ञान बढ़ता ही रहता है। तो मैं गुजारिश करूंगा अतुल भाई समापन की ओर बढ़े। અર્ચનાબેન સિવોનનું ગામ કરાવશે અને ત્યારબાદ આપણે સભાનું સમાપન કરીશું. અર્ચનાબેન, આપનું સ્વાગત છે. मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोतजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर् न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादौ न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुनैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुव्याप् सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्
शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। बहुत बहुत